की सेवा राष्ट्रीय आधार बने। ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना मिटे हैं ना मिटेंगे। जो भारत पे आंख उठाएगा, उसने आंख उठाई भारत पर, उसे जवाब हम देंगे, उससे जवाब हम देंगे। तो चलिए देश प्रेम, त्याग और समर्पण से ओतप्रोत आज के इस गरिमा में कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वंडरफुल। To the annual class culture presentation of class 6. Today, we don't just welcome you to an event, we welcome you to a journey of pride and patriotism. Our theme Vande Mataram, तिरंगे की शान में, celebrates the flag that flies high with stories of courage and dreams stitched into its colors. First, we begin with the 1971 war of unity and determination. जब अन्याय ने सीमा लांघी, जब मानवता रो पड़ी, तब भारत ने वचन लिया, सत्य और शांति की ही जीत होगी। आज मैं आपको ले चलता हूँ 1971 में, जब भारत ने अपने साहस, करुणा और वीरता का परिचय दिया। सन 1971 दुश्मन की भारी फौज और पीछे हिंदुस्तान की सरहद। 120 हिंदुस्तानी जवान, सिर्फ 120, जिनके पास ना टैंक थे ना हवाई पनाह था, तो बस एक बुलंद हौसला और अपनी मातृभूमि के लिए जान देने का जज्बा। फायर, हर तरफ से फायर कर दो, उन्हें बताओ कि लोंगेवाला में उनका स्वागत मौत कर रही है। इतिहास गवाह रहेगा कि 120 हिंदुस्तानी जवानों ने दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। देशभक्ति हमारा धर्म है, एकता हमारी पहचान। 1971 की यह गाथा भारत का स्वाभिमान। जय हिंद। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 1999 fought in the most unforgiving terrains. It stands as a symbol of indomitable bravery and patriotism. As we proceed, let's observe how our soldiers reclaim every inch of our motherland with unwavering resolve and the spirit of "ये दिल मांगे मोर"। साथी लगाकर वतन को बचाना। युद्ध का अर्थ है देश की रक्षा और सम्मान के लिए किया गया संघर्ष। जब कोई शत्रु हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता है और देश की शांति को खतरे में डालता है, तब युद्ध आवश्यक हो जाता है। युद्ध किसी भी देश की पहली इच्छा नहीं होती, लेकिन आत्मरक्षा के लिए इसे लड़ना पड़ता है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी चोरी छुपे जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर घुस आए थे। वे वहां से भारतीय सड़कों और चौकियों पर हमला कर रहे थे। यह भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें हमारे सैनिकों ने साहस दिखाया और वीर गति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में कई वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे व ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी हमारे बीच प्रेरणा के रूप में जीवित है। इन वीरों का बलिदान हमें सिखाता है कि देश सबसे जरूरी है। हमें उनकी देशभक्ति पर गर्व है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत बढ़िया। History then. You see each one of them. Some of them are state awardees. Yeah, I will introduce them. History then and resolute the Uri surgical strike that marked India's bold stand against terrorism. Now let's step ahead and see how strategy met courage and how our nations proved that every attack on our soil would be answered with strength and dignity. शौर्यम, तक्षम, अत्यम। शौर्य हमारा स्वभाव है, दक्षता हमारी पहचान है और विजय सुनिश्चित है। 29 सितंबर 2016 जब भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कमांडोज, आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वह मरते दम तक आपके हलक से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यस सर। यह मिशन देश के सम्मान का है।
कोई गलती नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ लक्ष्य। Commandos, remember, we are not going to destroy lives, we are going to protect millions. माता भूमि, पुत्र हम पृथ्वी। भूमि माँ है और हम सब उनके पुत्र हैं। कमांडोस, आज मैं आपको अपने दुश्मनों का सर धड़ से अलग करने का मौका दे रहा हूँ। क्या आप सब इस मिशन के लिए तैयार हैं? Yes, sir. क्या बदले के लिए आपका खून खौल रहा है? Yes, sir. कमांडोस, हाउ द जोश? Hi, sir. हाउ द जोश? Hi, sir. I repeat, हाउ द जोश? Hi, sir. ना झुके हैं, ना झुकेंगे, ना मिटे हैं, ना मिटेंगे। जो आँख उठे भारत पर उसे जवाब हम देंगे, उसे जवाब हम देंगे। उरी ने हमें दर्द दिया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक ने हमें कर्ज दिया। भारत माता की जय। जय हिंद। Wonderful. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। And now, Very nicely spoken. बहुत बढ़िया। लग नहीं रहा है कि लड़की। वाह। and now, to conclude this journey of valor, Operation Sindoor, a mission that reflects vigilance, intelligence, and the ever-ready spirit of our armed forces. Let's witness how India continues to safeguard its people with courage in its heart and determination in its soul. जय भारत। सिंदूर केवल एक विवाहिता के माथे का श्रृंगार नहीं है। आज सिंदूर ज्वाला और स्वाभिमान का पर्याय है, जो 7 मई 2025 को भारत का बिगुल बना। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। या अल्लाह, इस आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। इस आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यह व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। जय हिंद। They speak the same way. Mothers are speaking very powerfully. Courage and determination safeguard our country. Through models, visuals, and expressions, our students pay tribute to the spirit of India that never bows. With immense pride and gratitude, We welcome you to this patriotic journey. Vande Mataram! Jai Hind! Jai Bharat! Very nice. बेटा इधर आ जाओ। इस तरफ देखिए। देशभक्ति, एकता और गौरव को जहाँ हर स्वर, हर कदम और हर भाव माँ भारती को नमन करेगा। with immense pride and gratitude, we welcome you all to the class annual class cultural presentation. Our theme, Vande Mataram, तिरंगे की शान में, is a heartfelt celebration of India's unity, courage, unity, and pride.
welcome our revered Principal Sir, Mr. D. Tortua, whose visionary leadership and unwavering commitment to excellence continues to illuminate our path. Under your stewardship, this school flourishes as a sanctuary of learning, discipline and inspiration. We welcome you, sir. Our esteemed Vice Principal, Ma'am, Ms. Vinita Dhawan, whose steadfast dedication and meticulous guidance forms the backbone of our daily endeavors. With grace and quiet strength, you nurture both academic precision and holistic growth. We would like to welcome our Honorable Headmistress Ma'am, Middle Department, Ms. Nita Nijara, whose thoughtful mentorship shapes the formative years of our children with wisdom and compassion. Through your encouragement, young minds blossom into confident, articulate individuals. We welcome you, ma'am. Our respected Headmistress Ma'am, Primary Department, Ms. Ritu Dawar, your gentle guidance lays the foundation upon which futures are built with care and conviction. In your nurturing presence, curiosity finds direction and innocence discovers purpose. We would also like to welcome our respected Headmistress Ma'am of Pre-Primary Department, Ms. Julie Grover, whose warmth creates a heaven where tiny footsteps begin their educational journey. With tender dedication, you transform first experiences into joyful memories of learning. We would also like to welcome Administrative Officer, Group Captain Ravindra Bhatnagar, Sports Coordinator, Mr. Mandeep Singh, PTA alumni members, esteemed parents, distinguished guests, and dear students. A very warm and heartfelt welcome to all of you present here for the annual class cultural presentation of Class 6. It is both an honor and a privilege to address such a distinguished gathering here on this occasion that not only celebrates the boundless talents of our young learners, but also resonates deeply with it. With that, I would like to hand over the mic to Advait and Varnika for the instrumental music presentation. हो जाते हैं वहाँ संगीत मोर उठता है हर सुर में देश हर तार में तिरंगा. The carefully curated repertoire includes 2 Indian compositions, reflecting our nation's rich musical heritage and emotional depth, along with 1 Western composition, offering a global musical perspective. Through melody, harmony, and rhythm, the students express their love for the country, respect for its values, and a deep sense of national pride. This beautiful fusion highlights cultural diversity, musical discipline, and the students' growing instrumental skills, making this performance both inspiring and meaningful. As music fills the stage and the lights go softer, we invite you to feel the nation's spirit through strings, keys, and rhythm. A soulful instrumental presentation. Josh A. Junoon.
The lighting of the lamp marks the beginning of a shared journey today. It represents clarity of thought, warmth of values, and the light of knowledge that guides generations forward. As the flame rises, it reminds us that even the smallest light has the power to dispel darkness. I would now like to request our Honorable Principal Sir, Mr. Deepak Dua, along with our dignitaries, to please step forward and light the ceremonial lamp. Before we move ahead with the felicitations for the day, I would also like to welcome Mr. Jitendra Keswani, our PTA member. Thank you, sir, for always standing forward with us. I would now like to welcome our guest, Ms. Shashi Bhatnagar, who, when embarked upon her journey with our institution, brought with her not only mastery over the Hindi language, but a vibrant spirit that illuminated every space she entered. As a dedicated Hindi TGT, she transformed her classroom into a living canvas of expression, where prose carried purpose, poetry echoed emotions, and every lesson resonated with cultural pride. Over an extraordinary span of 37 years, she became far more than an educator. With her boundless enthusiasm and heartfelt warmth, she cultivated enduring relationships that extended beyond academics. Students found in her a steadfast mentor whose encouragement kindled confidence and whose guidance instilled discipline, tempered with compassion. Colleagues admired her tireless energy and unwavering commitment to excellence. Through the years that carried her forward, influence continues to thrive within these walls, a testament to a life devoted to teaching and nurturing. I would now like to invite our esteemed Principal Sir, Mr. Deepak Dua, to felicitate Ms. Shashi Bhatnagar with a planter as a symbol of our deep appreciation and enjoying gratitude. Thank you, sir. Thank you, ma'am. पीछे आ जाओ थोड़ा. In the balmy months of July 1981, our school was privileged to welcome an extraordinary academic luminary, Miss Meera Bhatnagar, an English educator whose name soon became intertwined with distinction, refinement, and inspiration. From her very first interaction, she enchanted her students with articulate expression, sparkling intellect, and a contagious zeal for the beauty of language. Across an illustrious journey of 37 remarkable years, she did more than impart knowledge. She molded characters. Generations passed through her classroom, emerging as articulate communicators, sensitive human beings, and devoted admirers of literature. A radiant custodian of wisdom, she continues to dwell in the spirit of this institution, cherished, honored, and remembered with deep affection. I would now like to invite our Reverend Principal Sir, Mr. Deepak Dua, to extend a warm welcome to Ms. Meera Bhatnagar, representing her with a planter as a humble symbol. Advik and Samira for the school song. कुछ गीत समय की सीमाओं से परे होते हैं, वे पीढ़ियों की आवाज बन जाते हैं। बाल भारती के बच्चे हैं, ऐसा ही एक गीत है
जो कर्तव्य, संस्कार और देश प्रेम का मौन संकल्प अपने भीतर समेटे हुए हैं। बाल भारती के बच्चे हम, isn't just a school song, it's a living legacy. Composed by respected Hindi teacher, late Shri Harish Chaudhary, this timeless anthem reflects the values that define us: responsibility, discipline, and deep sense of patriotism. Resonating beautifully with the theme Vande Mataram, Tirange ki shaan mein. It weaves us through a shared fabric of national pride, reminding each child of their duty to honor the motherland and to uphold the dignity and glory of the tricolor. माटी से है पहचान, इसी धरती के कण कण में बसता है भारत का स्वाभिमान. माँ से माटी rises as a powerful choral tribute to the spirit of India. Through layered harmonies and voices united as one, the choir evokes the grandeur of the land, the pride of the tricolor, and the unbreakable bond between the motherland and the protectors. Each note echoes courage, sacrifice, and unwavering devotions, honoring the selflessness of soldiers who stand fearless to safeguard the nation's freedom. As voices swell and merge, the performance stirs pride, gratitude, and unity, lifting every heart beneath the soaring spirit of the Tiranga. माँ से है
भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक भाव है जो नृत्य की लय में और संस्कार की मुद्रा में सजीव होता है। With every measured step and graceful spin, this classical dance unfolds a living portrait of India's rich heritage. Set to Main Bharat Ka Chehra Hoon, a powerful patriotic poem by Alok Srivastava. This performance reflects the spirit of a modern, progressive, and self-reliant India. An India shaped by tradition and driven by the aspirations of its youth. Grace flows seamlessly into intricate rhythmic footwork, while expressions narrate pride, strength, and cultural continuity. The Tarana segment gathers speed and precision, where rapid spins, complex rhythms, and sharp movements transform pure technique into a vibrant celebration of patriotism and timeless cultural traditions. As the dance concludes, it leaves behind not just movements, but a feeling of India, alive and radiant.
guidance of their teachers across academics, sports, creative pursuits, and leadership. As you move through this presentation, you will realize how curiosity is nurtured, challenges are turned into opportunity, and every student empowered to grow. Together, we continue to build a culture where excellence is not an end goal, but a collective pursuit guided by progress, purpose, and continuous learning. We now move forward to Prayas Se Pravada. This artistic yoga presentation is a tribute to the nation expressed through discipline, balance and collective strength. Set to a patriotic musical medley, the presentation reflects focus, resilience and quiet determination of young India. Adding a moment of pride and honor, NCC cadets join the display, symbolizing service, responsibility and commitment to the nation. We now invite you to witness Man Matra Bhumika, an artistic yoga display by our students. This
होती है, पर मन लगातार दौड़ता रहता है। दिखता बहुत कुछ है, पर समझ थोड़ा ही आता है। We scroll, we like, we share, and often forget to pause. Screens show us moments, but they don't always show us the truth. Somewhere between what we see online and what we feel inside, reality begins to fade. This presentation invites you to step away from the filters and step into real life, to look beyond the screen and reconnect with emotions that are honest and human. Ladies and gentlemen, I'm now presenting a dance drama that takes you from the world of illusion to the world of truth. Mahabharat 2.0, Real to Real. Thank you.
रिजल्ट के टेंशन को लीव कर। थैंक्स, ना नेम चाहिए ना फेम चाहिए, सिर्फ फाइट करने की फ्लेम चाहिए। हे फ्रेंड्स, आई चूज करना ओवर कंफर्ट। लेट्स गो भारत 2.0 फॉर ऑल। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे भी लगता है ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। अरे लेकिन इतने सारे सीन्स कैसे जाएंगे? हाँ, महाभारत में तो इतने सारे सीन्स हैं, ये तो बहुत मुश्किल होगा ना।
गांधारी कृष्ण को देगी ऐसा हैशटैग जिसे भुवन से हो जाएगा क्रैश गांधारी कृष्ण गांधारी कृष्ण गांधारी कृष्ण को देगी ऐसा हैशटैग जिसे भुवन से हो जाएगा क्रैश गांधारी कृष्ण गांधारी कृष्ण बहुत
ACCP. At the end of that, we teachers, parents are speechless. But today, it was a very special day for us. But you have been waiting since 23rd of January, isn't it, Nita ma'am? We planned it for 23rd January and the theme was patriotism because that was the day for Subhash Chandra Bose. 26th January was approaching, 30th January Gandhi ji, and it was a suggestion of your HM कि चाहे अप्रैल में हो जाए मेरा ACCP पर मैं थीम नहीं बदलूंगी. Can you suggest what was the reason? हमने थीम क्यों नहीं बदला? कुछ रोंगटे खड़े हुए और डांस करते हुए, ड्रामा करते हुए वो फील जनरेट हुई या नहीं हुई? Be true to yourself. Isn't it? हिंदी के कवि, I am talking to you my dear children. I am going to your parents also. Dear parents, किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की? तो बैठो. Yes. We will be giving you enough time for the photographs also. I really want to talk because this is the perfect time for the children to be in their classes to study and leaving their studies, they are here on stage. So we have a reason behind that. Like patriotism, देशभक्ति. School में अगर मैं कहूँ and everybody will agree to it, एक ऐसी भावना जो हर टीचर, हर स्कूल आपके मन में जगाना चाहता है वो है देशभक्ति की भावना. समझ में आ रहा है? आप ये मत सोचो स्कूल में आपको डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं. वो देशभक्ति की भावना जिस दिन चिंगारी आपके मन में जागेगी ना बेटा, आप अनुशासित भी हो जाओगे, आप समय का पालन भी करने लग जाओगे, सब कुछ करने लगोगे. हिंदी के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, यू नो मैम, उन्होंने बहुत खूबसूरत कविता लिखी है पुष्प की अभिलाषा. किसका पर्यायवाची है पुष्प? फूल. वेरी गुड, वेरी नाइस. तो फूल की अभिलाषा, कैन अ फूल स्पीक? यस. और फूल ने अपनी अभिलाषा प्रकट की है, चाह नहीं मैं सुरबाला के फूलों में गुथा जाऊं. मुझे नहीं जाना यहाँ पर, किसके? देवी देवताओं के पास, सम्राटों के सिर पे, मुझे कहीं नहीं जाना. Now listen carefully these beautiful two lines which are the ending of the poem. मुझे तोड़ लेना वनमाली. किसको? फूल को. उस पद पर फैला देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक. ये पुष्प की अभिलाषा. अभी कल वैलेंटाइंस डे लोग मनाएंगे, कितने महंगे फूल बिकेंगे. बाय गॉड, फूल नहीं चाहता बेटा, उसको वैलेंटाइंस डे नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है उसकी अभिलाषा क्या है? कि मातृभूमि की सेवा करने जो लोग जाते हैं उनके आगे मुझे फेंक दो, मैं अपने भाग्य की सराहना करने लग जाऊंगा. Isn't it? The poet was right. तो आपने वो भावना आज अपने भीतर भी जगाई और ऑडियंस को भी इस भावना से सराबोर कर दिया. Now there was a suggestion by two of the children from Jhasa's group. Where are the girls? सर ये दो बच्चे truly speaking मेरे पास आए कि हम चाहते हैं हमारे मम्मी पापा जो आए हैं ऑडिटोरियम में वो भी हमारे लिए कोई देशभक्ति का गीत गाए. मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ. Since that day we have been working on it. They are ready with the mics. They are coming in the audience with us. Are you there? Okay, you'll have to go there and control. मेरे बच्चे ये चाहते हैं कि जो गाना हम गाएं आप भी गाएं. You are holding a flag also? Some of the parents, are you holding a flag? No. So let's create an atmosphere and aura in the auditorium before we wish them good luck for their exams. They are here for us, dear parents. So this is your time, this is your participation. How do you come with your feel of patriotism? Isn't it? Okay, Anya and Machka, let's give them a big hand. Okay. To start with this song, they will join you. Okay, Anya, the mic is on. अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा. ढोल पपीहा कोयल गाए, ढोल पपीहा कोयल गाए, सावन झुमके आए,
हाय चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा, माते है माटी। Thank you so much, sir. Okay, it's time to honor our guest, Shashi ma'am. प्रधानाचार्य श्री दीपक दुआ जी, माध्यमिक विभाग की मुख्य अध्यापिका श्रीमती नीता निधारा जी और उनकी सभी सहयोगी अध्यापिका वृंद तथा प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम को भविष्य के कर्णधार विद्यार्थियों ने राष्ट्रीयता के महत्व को बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। इसे देखकर मैं भाव विभोर हो गई। वास्तव में सभी साधुवाद के अधिकारी। लिख के तो मैं बहुत कुछ लाई हूँ, पर सब कुछ कम पड़ता है। आपके मार्गदर्शन में, नीता जी के सहयोग और अंजू जी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। मेरे पास शब्दों की बहुत कमी पड़ रही है, महसूस कर। अंजू जी के लिए मैं खास तौर से कहूँगी, जो प्रतिभा, जो कर्मठता और जो क्या कहें, शब्द ही नहीं मिल रहे, कम है। इन्होंने मेरे अंतर्मन को पढ़ लिया। जो कुछ मैं कहना चाहती थी वो उन्होंने वहाँ कह दिया। इसलिए मैं बाल भारती परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करते हुए कृतज्ञता प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एक दशक के रिटायरमेंट के बाद भी आप लोग मुझे याद रखते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहती हूँ कि चाहे मैं छड़ी के सहारे आऊँ या कुछ और, मैं बोलूँगी नहीं वो, पर मैं जब आप मुझे बुलाएंगे मैं मन से आपके बीच में उपस्थित होने की कोशिश करूँगी। I think I would not like to take much of your time, and I would like to thank all of you for inviting me. So thank you so much for inviting me to the part of this joyous occasion of the annual cultural presentation for Class 6. I express my gratitude to the Principal, Mr. Deepak Dua, and Headmistress, Mrs. Neeta Nijhara, for giving me this honor. It reinforces the emotional connection to the motherland and fosters a sense of pride. In India's history, it acts as a constant reminder of our debt and a driving force to propel the nation forward. Vande Mataram holds profound significance in modern India as a timeless symbol of national unity, patriotism, and cultural pride. It serves as a unifying mantra for a developed self-reliant India, Viksit Bharat. It serves as a unifying force to strengthen the national bond and cultural identity. Today, in Shauryagata, Josh-e-Junoon, माँ से है माटी, मैं भारत का चेहरा हूँ, प्रयास से प्रवाह तक, मातृभूमि का, Mahabharat 2.0, Real to Real, and of course the school song, Bal Bharti ke bache ho. The students performed exceedingly well. A big round of applause for the participants, teachers, and also the parents. Thank you all. Well, the vote of thanks. Breathes there the man with soul so dead, who never to himself had said, "This is my own, my native land. This is by Sir Walter Scott." So, respected Principal Sir, esteemed dignitaries, distinguished guests, dedicated teachers, dear parents, and my dear students. With immense gratitude and a heart full of pride, I rise
to propose the vote of thanks. This morning has been illuminated not merely by sunlight, but by the radiance of courage, conviction, and collective pride. Under the inspiring theme, Vande Mataram, Tirange ki Shaan mein, we have witnessed expressions of valor not confined to the history books, but alive in rhythm, voice, discipline, and devotion. Valor is not only found on distant frontiers, it lives in character, in responsibility, and in the quiet resolve to honor our nation in everyday actions. The truest form of selfless love is love for one's country, a love that asks not for any recognition but offers dedication, a love that is respect in ourselves and for our values and reverence for our Tiranga. I extend my deepest gratitude to our respected principal, sir, whose visionary leadership continues to guide us towards excellence with purpose and integrity. Our sincere thanks to the eminent dignitaries for their steadfast support and encouragement, which enable us to nurture not only academic achievement, but also cultural depth and patriotic spirit. We are truly honored by the gracious presence of our distinguished guests today. Your encouragement strengthens the confidence of our young performers and enriches this occasion. A heartfelt appreciation to our co-scholastic teachers, whose dedication, meticulous preparation, and creative guidance transformed rehearsals into refined performances. To the teachers on duty across various arenas, whose seamless coordination and alert supervision ensured that every segment unfolded with precision. Our gratitude extends to the support staff, whose quiet, tireless efforts form the foundation of every successful event. To our parents, thank you for your trust, your partnership, and your unwavering encouragement. Your faith in your children empowers them to stand tall. And to our dear students, who have truly embodied the spirit of this theme, you have shown that patriotism is not merely spoken. It is expressed with sincerity, gratitude, discipline, and pride. As this day's celebration draws to a close, it also marks the culmination of our cultural journey for this academic year, 2025-26. Ahead of you lie your annual examinations. May your approach with them with calm confidence, steadfast focus, and unwavering determination. May your preparation reflect the same dedication you displayed on the stage today. We look forward to welcoming you next year with new dreams, renewed enthusiasm, and greater accomplishments. May your courage be quiet but constant. May your efforts be steady and strong. May each new beginning bring brighter purpose. May your journey always lead you forward. Thank you and Jai Hind. It's coming from your teachers, from your parents, and thank you for sparing your valuable time for this ACCP. We know we are running late with it, but you did it, you proved it, and you generated it. Thank you so much. We'll be going for a group photograph. Let's go viral. हमारे बच्चे तो चाहते हैं viral हो जाएं. So we'll be having a group photograph, and tea arrangements have been made for the parents also. There is a beautifully selfie stand created by our computer teacher Bhavna ma'am. Go, enjoy, click your photos, and celebrate Valentine's Day tomorrow. Okay, let's go for a group photograph. Sir, ma'am, please.
escorted here.